because we're about to launch something that we really believe in. Before that, we're hoping we can communicate a bit of what Instagram is, and of course address a few of your queries also regarding Instagram. So if I could please have on stage our head of partnerships for Facebook India, Manish Chopra. Maybe we could have a round of applause please for him. Thank you everybody. Sat Shri Akal. So happy to be back here in Chandigarh after a significantly long time. I lived here for a couple of years and I've been traveling here on and off, but really happy to be here. Thank you everyone for being here. All our friends from the media. It's very hard to see anything from up here, but today we've got this session is an exciting, interesting session that we've planned to tell you a little bit about Instagram, why we're here, to tell you a little bit about Born on Instagram program, and also to interact with two very incredibly inspiring Instagrammers. And this is the term that we'd love for you to be able to capture because Instagrammers is the way we call the entire community that lives, breathes on Instagram. Excuse me, sir. Could you tell everybody to sit down? Somebody? Everybody. Please, everybody. So, can somebody help here because I think everyone sitting on this side is finding it hard. Exactly. चल रहा है वो वीडियो बस अब बैठ जाओ तो आप सब वो चल रहा है कैमरा रोल कर you can take this table उस पे बैठ जाओ I don't know he likes me Yeah, maybe we could break it up and put some here and some here. हाँ या अगर आप नीचे बैठ जाओ प्लीज मेरा बैग बहुत Thank you so much. If you want, I can be in one place only. If you want to leave your cameras fixed. No problem. I'll do that. I'll be on this side, so you can. Center would be perfect. Center would cover the screen, so that's why. Let me be a little bit to the left of the screen. Thank you so much. I appreciate that. Okay, my name is Manish Chopra. I've been at Facebook India for the last year. I lead partnerships across Facebook, Instagram, WhatsApp, and our family of products. Very excited to be here. Today we are here actually to talk about Instagram, and that is, before I kick off, I'd love for you to have a look as to what really captures the entire vibe of Instagram. And this is what I call the Desi vibe of Instagram. So let's just play this video. No big deal. What no time you be giving me the feel. Here's my family, so we can get real. It's like this, hashtag just grab the bro. Maybe I'll swap out just tag the bro. My score been down, it's all in here. No time, move on, I thank you. Next. But now play your time to be seen. One hot spice for a little scenes. Should be the one that joins solitude bombs. Here made a flat, made a flow, made a bronze. But this hashtag just grab the bro. Maybe I'll swap out just tag the bro. My score
Fantastic. That was that video always has a thumping, make my heartbeat go thumping. But today we're here to talk about three things. We're here to talk about Instagram. We're definitely here to talk about why people love Instagram. And we'd like to give you a little bit of an idea about what this program, Born on Instagram, is here, what we're announcing, why we're excited about this. We believe, let's start with talking about Instagram first. Fundamentally, Instagram is really about two things. Really about people and their passions. And the way we talk about our mission is really about the things that they love to do and the people that they love to follow. Instagram is a place where you would see people have come together and things have come together. And that's the place where we look at, when we build Instagram out and new things in Instagram, we really look at the way people are expressing themselves. This is the home of expression. There are two sides that we'd love to innovate for in Instagram. We want to focus on people first and make sure that they're able to connect with, in multiple ways, they're able to connect with who all they'd like to follow and care about. But they also would like to focus on trying to figure out what they're inspired by. Just a simple fact, right, that works is that the kind of work that we do in Instagram, we find a lot of people follow celebrities for sure, friends and family for sure, but they also follow interests and businesses. And so therefore, from our perspective, as people explore facets of who they are, that comes through on Instagram. But what also comes through is very clearly businesses getting born on Instagram and people establishing businesses on Instagram. And that, I think, fundamentally is the unique platform that Instagram represents. If you look at how Instagram has evolved, it started with a photos, expression platform where, if you would remember early on, the square photo, the square format photo is what defined it, right? With a approach that led to immense amount of interest in the way people were spending energy, effort in creating the right photos. Then in 2013, video came to the scene. And video was incredible manifestation of, again, expression for them. 2016, we launched the incredible, aspect of stories, right? And I'll go into stories a little bit further because stories is something that's become so fundamental, so core to the way people use Instagram and feel so good about it. And then recently, last year, we launched Instagram TV, and the icon that you see there, which is still being rolled out, shopping across the world. Now, Instagram TV is for longer form video, and that fundamentally worked brilliantly because it helped creators find an avenue of expressing themselves more and expressing themselves in different fashions. And again, if you look at all of these, it was all around expression. And I think being the home of expression, being the home of safe expression, is the core position that Instagram was able to take in a lot of people's lives. How it manifested is in an incredible fashion. If you look at the numbers, right, and just these small icons, it is everybody here. It's young people, Gen Z, Gen X, it's millennials, it's also older people. And it's people following all kinds of passions, different backgrounds, different ethnicities, different across the country. And I think that's the point that actually will land better when we talk about Born on Instagram also. This is a manifestation of the beauty of the platform, but the love that people have given, right, and used this platform to express themselves. I think what we're seeing, and I mentioned this earlier, right, is a fantastic
growth, right, in our stories product, right? And stories, I wanted to go a little deeper in it. Stories fundamentally is the method, ephemeral method, right? 24 hours only, a method that anybody can put out what they are feeling at any point in time. Video, multiple ways of being able to express themselves, use a lot of stickers or use a lot of additional information to again put out their view at that point in time and do multiple stories in a day. And that's really what is happening here. If you look at the growth that has happened, today this is a daily number. 500 million is the adoption of stories, right? It's incredible. And I think what this has done, right, is create that impression of, or that ability for them to have confidence that they can post multiple stories and share that piece, and then it goes away. Most celebrities, most creators are, and most people are a little bit more conscious, or they think a little bit more about the posts that they put. And their posts are, in a way, they want posts to live on their timeline for a longer period of time. And the consumer behavior on stories is phenomenal. That has opened up opportunities for businesses, opened up opportunities for creators, opened up opportunities for everybody to express themselves. Do you all use stories? Yes. Thank you. I think the best thing I like about stories is how you can express yourself in an exciting, playful manner using the full screen, right? And also in the manner that's actually very natural, right? Using a phone in a vertical format is so clear, so natural. So I think that's what has led to this dramatic growth that we've seen with stories, right? I wanted to spend a little bit of time going a little deeper, right, on the love aspect of Instagram, right? Why is it that people love Instagram? I think three aspects define that. The first is the community. We call it a vibrant community. Vibrancy can be measured by how frequent, how much, how carefree, how lovingly they use that platform. But I think what we want to measure vibrancy with is actually defining culture. Movies, music, food, travel, passion, any kind of passion, right? Any kind of culture gets made, starts on Instagram and gets propagated on Instagram. We're very happy that people are excited about the platform, right? And all that it can do for them to be able to express and define culture. We've seen some very incredible examples that are happening across sports, across movies and music, as I mentioned earlier, but even micro passions that people have, right? The people who run, the people who are going for Ironman, the people who are creating a new kind of how do I do something video. It's all happening here, and that is the vibrancy in the community. The second piece is cultural relevance. Again, big word, but you know what cultural relevance really means to me? What it means to me is every time I talk to anybody who is, and I'm assuming all of you are Instagrammers, but when I talk to you about Instagram, you always say, my feed, my Instagram, my stories, my explore, all those pieces, right? And how is it my? It is my because it is actually the only product that exists that is fully customized or personalized for you. It represents really what your interests are, how you use the platform, what you follow, what your passions are, what you are happy about, what you're agitated about. So I think that entire thing comes through very beautifully, and that is why it's relevant for you. The culture, as you define and you care about, Instagram reflects that. Test it out. In fact, we're not doing a deep demo about the product, but as you look at now your explore and your feed, right, you'll start seeing how it reflects what you're caring about and what you're following, right, what you see more and more of, and it will pop up that in the nicest way that is possible.
Last aspect was visual expression. And we spoke about this, right? We spoke about the tools that are there and how Instagram gives the right tools for visual expression. It's about storytelling. I think the creators, the people who have started to really understand or adopt the platform for, becoming, in a way, big expression leaders, right? They use all the tools that are there on the platform, but most of the tools are really very, very easy and interesting to understand too. And I think that's what's coming together, right? People have started using the feed very nicely, the stories as we mentioned earlier, but even IGTV and going live. Celebrities, businesses, all have started to do this in a very interesting manner, right? And I think that is the aspect about the platform that has evolved, right? And it's at scale. It is not, something that we see different kinds of adoption happening in different parts of the world, right? Pretty much similar kind of behaviors are happening globally. Have you used the stickers and the polls and the location and the hashtags and the countdown, Yes. all those things? Fantastic. I've got two girls. Both are budding Instagrammers, and both of them have been teaching me really a lot of new features in it. I think I learned more from them than from my colleagues who are experts at Instagram anyways. I think these three aspects have been exciting. I think what's happening going further is how people have started to connect with businesses. And I think if you look at the various businesses that are on Instagram, it is very, very interesting, the gamut of businesses and the gamut of passions that people are able to build and create small micro businesses around, right? And get popularity, get people to follow them, get people to buy, get people to connect with them. This is really a large-scale transformational approach, right, to getting businesses new customers. One more thing I wanted to talk about as we were talking through this. Recently we did something very interesting. We brought music into Instagram in a very unique way. Have you all, how many people, show of hands, let's get this interactive. How many people have tried to use the music feature and add it to story? Wonderful. None of you in the first row? I would love it if you add one of the songs to your story next time, right? And we have a lot of Punjabi songs. We've gone ahead and got the entire music libraries across the country in multiple languages onto the platform. It was very exciting how we saw, even in recent pop culture moment like the U2 concert in India, a lot of people using the music stories and adding to both their own images, but also adding to the moments that were happening on the stage and capturing all that. And I think that really comes together, right? Because of this, the ease of use of these kind of features. Just choosing the song, attaching the song, you can get the lyrics come up, and this is an example of lyrics that come up in Punjabi. It happens across, it's going to roll out in multiple languages. And that is, I think, an exciting way, right, to get a new kind of expression out there. This product has been recently launched in India. I think we are only about, I'd say about 6-8 weeks into it. And phenomenal response on this product. I wanted to go now a little deeper and talk about creators. Because creators are really what have epitomized what Instagram stands for. And how Instagram really has become a platform, a place, right, for them. Where it's true expression, genuine expression, right? And their ability to connect and reach their followers in a very, very, very humble and unique way. And if you look at what creators have been doing,
and how we believe that we are going to take this further is around this program of what we are launching of Born on Instagram. Born on Instagram is our initiative to celebrate creators and celebrate creators who've made Instagram a place where communities are thriving. Now communities, there are very, very large creators that are on the platform, right? Somebody on the platform has millions of followers and a lot of interactions. That's a community, large community. But somebody has also got 50,000 followers and a lot of interaction, and they have their own community. So creators of all sizes, passions, right, that have become brands, and that's what we've seen happen very, very uniquely as a platform on Instagram, right, where creators have been able to make their passion in food become a brand. One of our Instagrammers of the year of 2019, Pooja Dhingra, is all about food, right? We believe that this program, what we are launching, Born on Instagram, is to take the momentum that we have seen on the platform, but actually go out there, right? And we intend to do this by taking Born on Instagram across the whole country. Chandigarh is the first place where we are, but it's basically our program to go and discover, showcase and celebrate creators and bring out their unique talents, their unique expressions, and be able to bring that. We're also doing this program with the point of view that let's recognize the boldness, the enterprise, and the hidden gems that are there across the country. Let's start with a few right here. These are the people who I would say exemplify Born on Instagram in our region here. Street food Chandigarh, really a beautiful place to, and tempting, especially because Chandigarh is home of awesome food, right? Punjabi is home of awesome food. Racerback Mama, she actually uses the platform, and again I refer to the handles because that's really the right Instagram way of referring to them, right? She's basically an incredible writer who's gone ahead and used a blogger who's gone ahead and used this method to add visual appeal and to be able to capture across her passions, right? Fashion, food, luxury, kids, everything. And music again, right? Gunazar has been trying to pull together very interesting ways of bringing that expression together. I think these are the kind of people who we will showcase, and across the country. It's exciting that they've built incredible communities already with their fans, and our endeavor is to be able to grow this. I'm not going to go through the program summary. Some of this is already with you, but it will be there in the handout that we have. But basically, what we're trying to do here is reach out, right, to a large group of creators across various regions, and then be able to connect with them. And our program that will run for the rest of the day with the creators involves telling them of new tips and tricks, getting creators to work with other creators and create, as simple as that, but also share with them stories and best practices from across the country and across the globe. And so this is the first time that the Instagram team has come out and is visiting multiple cities across the country. And so I'm super happy that we're starting right here. Let's now get a few of our core Instagrammers on the stage. And I'm so excited that we have these two gentlemen here on the stage to talk to you also about how they believe Instagram is, a place where they've actually been able to express themselves. They've gone beyond, the other methods that they've had till now. Karan, are they going to come on board? Yeah, thank you so much, Manish. Born on Instagram की खबर सुन के मैं तो बहुत excited हूँ. अगर मैं creator होता, तो मैं तो बहुत excited होता. And if we can now please have on stage two of
incredibly popular Instagrammers of India. One is none other than Jassi Gill. आप इन सबको जानते ही हो. He's a singer, actor, incredible performer with over 6 million followers on his Instagram handle. If you can please, with a round of applause, welcome Jassi Gill. And the other incredible Instagrammer we have with us today is Harsh Beniwal, again with a couple of millions of followers on Instagram. He's an actor, a comedian, singer, and he's also recently been a part of Student of the Year 2. With a round of applause, if you could please welcome Harsh Beniwal. For the photographers in the room, Manish, if you could just stand together for a picture with Jassi and Harsh. If you could please have a photo moment quickly for 2 minutes. Okay, requesting everyone to please stay low so that everyone can see the people on stage. अगर सारे लोग बैठ जाए नीचे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. सब लोग देख पाएंगे स्टेज पे क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं. जस्सी और हर्ष भी वेट कर रहे हैं कि आपसे थोड़ी बातें करें. Thank you so much. Please, may I request you? Yeah. Your camera. Can I? Can you just... Sir, if you want to leave now, you can. सर आप नीचे बैठ जाओ, किसी को पीछे कन्वर्सेशन चलने बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ. अगर सारे प्लीज नीचे बैठ जाएं. Thank you, Manish. Thank you so much. Thank you. Really appreciate. As you can see, both of you are super popular, right? Everybody wanted to take a lot of pictures, but really happy that you're here. Thank you for flying in. Thank you for being here. Let me start with a very simple question, and I want to ask the same question to both of you because I'd love to hear how you feel about it. How do you use Instagram? How is that your way of expressing yourself? हिंदी में ओके थैंक यू ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੁਲਾਵਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਆ. ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈमिली है सारे, मैं मिलता रहना ना जी बिल्कुल. सो मेरी इंस्टाग्राम जो जर्नी शुरू हुई थी 2012 में शुरू हुई थी जब मेरी पहली एल्बम आई थी. तब से लेके मैं इंस्टाग्राम अपने फ़ैन से अपना म्यूज़िक शेयर करने में म्यूज़िक शेयर करने से को लेके शुरू की थी. बट उसके बाद जैसे जैसे इंस्टाग्राम ग्रो होता गया, मैं बैठा बात कर रहा था कि मैंने इंस्टाग्राम तब शुरू किया था यूज़ करना जब ये बच्चा था, जब 2 साल का बच्चा था जब शुरू किया था, और अभी जवान हो गया है और अभी मेरा इंस्टाग्राम भी जवान हो गया है. मैंने शुरू किया था बहुत कम. अभी मैं पिक्चर्स देख रहा था पुरानी अपनी, तो किसी पे 2000 लाइक्स थे, किसी पे 3000 लाइक्स थे. तो अभी देख रहा हूँ अभी किसी पे 3 लाख हैं, 4 लाख हैं. तो जैसे जैसे वो जवान हुआ है मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी जवान हुए हैं, मैं भी अच्छी फॉलोअर्स बढ़े हैं. तो मैं मोस्टली मैंने अपना इंस्टाग्राम जो शुरू किया था, मैंने जैसे बताया म्यूज़िक से रिलेटेड शुरू किया था. बट जैसे जैसे इंस्टाग्राम यूज़ करते गए तो पता चलता गया कि इससे हम और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. तो अभी पिक्चर से शुरू हुआ था, अभी वीडियोस भी डाल रहे हैं. बट मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ अपनी म्यूज़िक शेयर करने के लिए और अपने फ़ैन से इन टच रहने के लिए, अपनी चीज़ें बताने के लिए उनको, और अपनी जो मैं रियल लाइफ में जैसा हूँ जो चीज़ें करता हूँ वो दिखाने के लिए. फैंटास्टिक. थैंक यू सो मच. हर्ष आप बताइए. मैं पंजाबी नहीं आती, मैं नमस्ते कह सकता हूँ. तो भाई जितनी अच्छी, मतलब मेरे को थोड़ी बहुत भी नहीं आती पंजाबी ऐसे. नहीं यार, आप दिल्ली से हो, दिल्ली में तो पंजाबी दिल पंजाबी है, बस लैंग्वेज नहीं है. हाँ, मैं हिंदी में बोलूँगा. मैंने स्टार्ट तो बहुत पहले करा था. पहले मेरे को लगता था इंस्टाग्राम एक सिर्फ फ़ोटो एडिटिंग ऐप है. उस टाइम ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि इंस्टाग्राम किस लिए है. तो जो मैंने जेन्युइनली ढंग से स्टार्ट करा यूज़ वो किया था 2015 में, जब मैंने वाइन्स डालनी स्टार्ट की थी, जो अपनी कॉमेडी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं. तो वो 2015 में डाल रहा था, और वो मैं ऐसे ही डाल रहा था कि मेरे को शौक है, मैंने डाली और उसको धीरे धीरे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ. तो जब तो मैं अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए डालता था, अब धीरे धीरे अब लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ. जब लोग इतने पब्लिक जुड़ी
तो अब उनसे ट्रैक करने डालता हूँ लाइक अपनी रियल लाइफ में मैं कैसा हूँ, जैसे भाई ने बताया। और लाइक सभी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब रियल लाइफ में कैसे हैं, क्या हरकतें करते हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। हम भी नॉर्मल है, सबको लगता है कि हम कुछ अलग करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम भी घर वालों की डांट सुनते हैं अभी भी, ठीक है। मम्मी अभी धनिया लेने भेजती है हमें, तो तो वही हमारे साथ कि हम नॉर्मल लाइफ दिखाते हैं लोगों को, जैसे हम हैं, जी रहे हैं, जो भी है। और जब वीडियोज़ आते हैं तो बताने के लिए कि अब वीडियो आई, अब देखो, अब ये काम किया, अब देखो, अब यहाँ पे आया हूँ इंस्टाग्राम के इवेंट पे, ये देखो। तो हम यही यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी जो इन सालों में पहले जो यूजेज थे उससे अब क्या चीज़ें आपको लगी हैं कि जो एकदम बदल गई हैं आपके लिए? इन टर्म ऑफ जिस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं आप प्लेटफॉर्म पे, और जिस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से, इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से। लाइक बहुत चीज़ें लाइक अपनी ऑडियंस से इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी चीज़ें खुल गई हैं। बिकॉज पहले क्या होता था, सिर्फ आप वीडियो पोस्ट कर पाते थे, वीडियो पोस्ट लाइक फ़ोटोज़ पोस्ट कर पाते थे। अब आपके पास स्टोरीज़ हैं, स्टोरी के अंदर आप उसमें उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आपको लगता है क्या आंसर, लाइक जैसे मैं पूछ सकता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी आने वाली है, टाइटल गेस करो आप, तो वो हो सकता है। और लाइक क्वेश्चन हो गया, पोल्स हो गया, अब म्यूज़िक भी आ गया उसके अंदर। तो आई थिंक इंटरेक्शन करने के लिए काफ़ी अपनी ऑडियंस से काफ़ी बड़ा हो चुका है इंस्टाग्राम। तो एक वो चीज़ मेरे को लगती है काफ़ी चेंज आया इनिशियली जब स्टार्ट किया था, और अब जो चल रहा है इंस्टाग्राम, तो वो उस चीज़ में बहुत बड़ा हो गया। जी क्योंकि जो इसके फीचर्स हैं वो बहुत चेंज हुए हैं हर साल, हर टाइम जैसे जैसे चेंज होते आए हैं, हम यूज़ करते आए हैं। और मुझे याद, जैसे भाई ने बताया कि मुझे भी यही था कि इंस्टाग्राम सिर्फ पिक्चर्स एडिट करने की ऐप है कोई, जब मैंने अपने आईफोन पे इंस्टॉल की थी तो तब तक यही पता था। और तब उस टाइम पिक्चर्स ही पोस्ट होती थी, सिर्फ ना मैसेजेस आते थे, ना आप टैग कर सकते थे, सिर्फ पिक्चर पोस्ट करके बस ऐसा था कि हाँ भूल जाओ कि देखो क्या होता है ये था। बट उसके बाद जैसे जैसे इंस्टाग्राम ने अपने फीचर्स चेंज किए, मैसेजेस आने शुरू हुए वहाँ पे। अभी स्टोरीज़ डाल सकते हो आप टैग कर सकते हो लोगों को, और जैसे भाई ने बताया क्वेश्चंस डाल सकते हो, क्विज डाल सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो हम यूज़ करते हैं अभी। और मुझे लगता है कि इसका एज एन आर्टिस्ट हमें बहुत फ़ायदा हुआ है अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, अपने फैंस के साथ बातें करने के। जैसे अभी एक नया फीचर था जो मुझे लगता है जो बहुत अच्छा फीचर था, जो लाइव वीडियो में आप लाइव जब आप जाते हो इंस्टाग्राम पे, अपने फैंस को साथ में अपने लाइव लेके आ सकते हो, उनसे आप ऐसे बैठ के बात कर सकते हो कि उनको लगता है कि आप सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो वो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगता है इंस्टाग्राम का, जो मुझे लगता है कि जब आया था मुझे सबसे जल्दी थी। मैं मेरी टीममेट है मयूरी, मैं उसको बोल रहा था कि जब कब करें। वो बोल रही थी पाजी अपना जब नया गाना आएगा तब करेंगे, गाने के बारे में बातें करेंगे उस पर। तो मुझे लगता है पंजाबी इंडस्ट्री में मैं पहला था जिसने वो लाइव इंटरेक्शन की थी अपने फैंस के साथ। तो वो बहुत अच्छी फीचर थी जो मैं जब भी मुझे लगता है कि कभी दिल हो या आप फ्री बैठे हो, आपको लगता हो कि आप अपने फैंस के साथ या अपने चाहने वालों के साथ बात करना चाहते हो, तो वो सबसे अच्छे फीचर मुझे लगता है उसमें। वो जो मेंशन वाला जो फीचर है वो भी बहुत अच्छा है और आर्टिस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बिकॉज अगर एक ने डाली और आप अगर कोई भी आर्टिस्ट उसे रीपोस्ट करता है तो उसको देख के 10 और लोग बनाते हैं उस चीज़ को। लाइक कोई गाने का बना दिया, टिकटॉक वगैरह बना दिया, हमारे डायलॉग का कुछ कर दिया, तो आई थिंक ये बहुत आर्टिस्ट के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है। आपने जो मेंशन की बात की, आप लोग कई बार हमने देखा, आप भी करते हैं, बाकी क्रिएटर भी करते हैं, साथ में करते हैं, साथ में कुछ नया यूनिक एंड इंटरेक्टिविटी करके दोनों साथ में करते हैं। स्पेशली म्यूज़िक में तो होता ही हमेशा। आप लोगों को ग्रो करने के लिए, एंगेजमेंट, फॉलोअर, आपका अपना जो रीच है उसको ग्रो करने के लिए आपने कोलैबोरेटिव काम किया है इंस्टाग्राम पे, उस पर कैसा रहा था आपके लिए? जी मैंने बहुत सारे ऐसे, जैसे मेरा गाना था सुरमा काला जो जस मानक ने लिखा हुआ था, और उसकी अनाउंसमेंट मैंने जैसे आपको बताया कि लाइव वीडियो पे जाके की थी। जो जस मानक के फ़ैन थे उनको सबको नोटिफिकेशन चला गया कि जस मानक लाइव हुआ है जस्सी के साथ। तो इधर जो मेरे फैंस थे उनको, तो उसके साथ आपकी ऑडियंस जो रीच है वो बढ़ जाती है। और वो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने आपको लोग फॉलो करते हैं सबके पास आपका नोटिफिकेशन जाए या सब आपकी लाइव वीडियो देखें, तो उससे हाँ आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। ऐसे ही मैंने नेहा कक्कड़ के साथ गाना किया था निकले करंट, तो उसका भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हर बंदा जानता हो और हर रोज़ आपके साथ नए लोग जुड़ते हैं। अगर आप इनसाइट्स में जाके देखो, उस पर आपको पता चलता है इंस्टाग्राम पे कि आप पिछले हफ्ते से इस हफ्ते तक आप कितने लोग जुड़े, कौन सी जगह से जुड़े, कौन से एज ग्रुप के जुड़े,
और कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कहाँ के लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ आपके साथ जुड़ता रहता है वहाँ से, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा आपका म्यूज़िक सुन के आपको जानता हो। तो कई लोग आपको जब मेंशन करते हैं, जैसे किसी के साथ आपको स्टोरी में टैग करते हैं, तो वो जब आगे आगे जाती है चीज़ तो उसके साथ आपको लोग फॉलो करना शुरू करते हैं। तो मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि मैं हमेशा इस चीज़ में बहुत बिलीव रखता हूँ कि टीम वर्क और मिलके काम करने में जो मज़ा है, और जितने लोग आप मिलके काम करके जोड़ सकते हो, अकेले नहीं जोड़ सकते। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जब भी कहीं भी ऐसा हो सकता हो जहां आप मिलके ऑडियंस तक पहुंच सको ज़्यादा से ज़्यादा, वो करना चाहिए, और मैं करता रहता हूँ। मैं ज़्यादा कोलैबोरेशन की नहीं, बिकॉज इस फील्ड में लाइक मैं इनिशियली करता था बहुत पहले, अब ज़्यादा की नहीं। बट हाँ, ये बहुत एक लाइक इसमें सच्चाई है कि अगर दो जने कोलैबोरेशन करते हैं और सपोज मेरी ऑडियंस उनकी ऑडियंस नहीं है और उनकी ऑडियंस मेरी ऑडियंस नहीं है, तो जब आप कोलैब करते हो तो दोनों की ऑडियंस एक दूसरे को फॉलो करते हैं। लाइक सपोज मैंने जस्सी पाजी के साथ किया या जस्सी पाजी ने मेरे साथ किया, अब ऑब्वियसली इनको सब जानते हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं मेरी ऑडियंस जानती, मेरी ऑडियंस जानती है। अभी हम करेंगे। नहीं, हाँ, बट इन भी करेंगे। बट इनकी सारी ऑडियंस मेरे को नहीं जानती होगी, तो फिर इनके अगर हम पाजी के साथ कोलैब करता हूँ मैं, तो फिर पाजी की ऑडियंस मेरे को जानेंगी। तो यही चीज़ है, कोलैबोरेशन में ये फ़ायदा होता है कि आपकी और एक दूसरे की ऑडियंस एक्सचेंज होती है, तो वो आर्टिस्ट को ग्रो करता है और लाइक दोनों आर्टिस्ट को ऑब्वियसली ग्रोथ में फ़ायदा होता है। और फिर बाजी ने बताया मिलके काम, तो मिलके फिर ऐसे होता है। आपने ये भी इनसाइट्स के बारे में बताया, ये एक फीचर है जिससे सर जो सब क्रिएटर हैं, एक तो बात है कि अपना अपना हुनर या अपना पैशन, अपनी एक्सप्रेशन जो भी डालते हैं, मगर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं जो क्रिएटर्स को हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए कि क्या चीज़ काम कर रही है उनके लिए, क्या कैसे काम कर रही है, कौन सी चीज़ों पे वो ज़्यादा एफर्ट डालें, एनर्जी डालें। जी सॉरी, मैं वही बोलने वाला था कि इससे पहले मुझे इतना पता नहीं चलता था कि आपने गाना डाला यूट्यूब पे, आपको व्यूज़ आ गए, आपको लगता है कि आपका गाना ठीक है, चल गया, हिट हो गया है। बट जब आप इंस्टाग्राम ये हो गया, तो जब मैंने इनसाइट्स पे जाके देखना शुरू किया, तब आपको पता चलता है कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पे पहुंची और कौन सी ऑडियंस ने देखी। और आज भी अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ या कोई पिक्चर, एक पिक्चर की वहाँ पे रिपोर्ट है, आप उसकी एक पिक्चर की इनसाइट्स खोल सकते हो और उस पर देख सकते हो कि कितने लोगों ने आगे शेयर की है और कितने लोगों ने ये सेव की है और कितने लोगों ने लाइक की, और इसकी रीच, टोटल रीच कितनी हुई है, मतलब देखी कितने लोगों ने, लाइक और कमेंट ये नहीं, देखी कितने लोगों ने, जैसे निकलते हम स्क्रॉल करते देखते हैं। तो इनसाइट्स में आपको ये भी पता चलता है कि आपकी आजकल जो ऑडियंस है, कहाँ से आपको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, आप कैसा कंटेंट डालो इंस्टाग्राम पे, आप कैसा गाना करो, सो दैट जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो दिल्ली से, अगर मैं अपने जाके इंस्टाग्राम पे देखता हूँ तो मैक्सिमम दिल्ली से है, फिर जयपुर है, फिर मुंबई और फिर जाके चंडीगढ़, मतलब फिर ऐसे पता वहाँ पे पता चलता है आपको कि, तो फिर उस हिसाब से मैं अभी गाने जब नेक्स्ट प्लान करता हूँ, मैं ये सोच के करता हूँ कि ओके ठीक है, आजकल ज़्यादा लोग दिल्ली से हमें सुन रहे हैं, तो उनको कैसा म्यूज़िक अच्छा लगता है, उनको कैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो वैसा कंटेंट रेडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैंने अल्लाह वे गाना किया था, तो मेरी अभी थर्ड मोस्ट जो फॉलोइंग है वो मुंबई से होनी शुरू हुई है अभी लेटेस्ट, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ हिंदी करना चाहिए, अभी नेक्स्ट हिंदी फिल्में आ रही हैं, तो फिर मैंने वैसा कंटेंट, अल्लाह वे मेरा गाना था जिसमें मैंने एक थोड़े हिंदी लिरिक्स चूज़ किए और मैंने वो हिंदी पंजाबी मिक्स करके गाना बनाया, और वो उसकी रीच बड़ी अच्छी है, और वो जो मैंने टारगेट करके बनाया था गाना, जिस ऑडियंस के लिए उनके तक पहुंच रहा है, तो एक बहुत अच्छी हेल्प मिलती है आपको आपका कंटेंट रेडी करने के लिए, जिससे आपको पता चलता है कि आप कैसा कंटेंट रेडी करो, सो दैट जो आपको लोग अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए आप वो सही कंटेंट दे सको। ये जो बात जस्सी जी ने कही है, ये हर एक इंस्टाग्रामर क्रिएटर के लिए बहुत वैल्यूबल है। हम इंस्टाग्राम से आके जितनी बार भी बोलें या इनसाइट्स हैं, प्रोडक्ट में ये है, हम ये सब देते हैं, इस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ सकता जितना जस्सी ने आज लैंड किया है कि कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करें और कैसे ग्रो करें। दिस इज़ वाई बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम, ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया है, मैं बता दूं, क्रिएटर से सीखें और क्रिएटर गुरु से सीखें। सर मेरे दोस्त हैं बब्बल, जो ना आप बहुत लोगों ने उसकी इंटरव्यू की होगी, उससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि जस्सी की एक बुरी आदत बताओ या जस्सी की एक ऐसी चीज़ बताओ जो बहुत करता है, वो हमेशा बोलता है कि ये फ़ोन बहुत यूज़ करता है, और हमेशा उस किसी को भी बोलना, उसने बोलना हो कि इसकी जस्सी की आदत है ये फ़ोन बहुत यूज़, पर मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे
ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है आगे, और ये आपको कोई आके नहीं बताएगा, ये आपको खुद देखना पड़ेगा, अपनी चीज़ों से देखना पड़ेगा कि अपनी कौन सी चीज़ कहाँ पहुँच रही है और कैसी ऑडियंस आपके साथ जुड़ रही है और आपको किसके लिए कैसा काम करना चाहिए. सो इंस्टाग्राम इसमें बड़ी हेल्प कर रहा है. और मुझे लगता है कि मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये फ़ोन बहुत यूज़ करता है, बट मुझे लगता है फ़ोन इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे वहीं से सारी चीज़ें मिलती हैं. क्योंकि आज के टाइम पे ना तो इतना टाइम मिलता है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकूँ, ना इतना टाइम मिलता है कि मैं अपने लोगों के साथ बैठ के बातें कर सकूँ, ऐसे टाइम नहीं मिल पाता. तो एक फ़ोन ही ऐसी चीज़ है जिससे सारी नॉलेज मिलती है कि क्या कर सकते हैं, क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, सब वहीं से पता चलता है. Thank you so much. Harsh, one last question. Yeah, one last. Harsh, आपका क्या प्लान है आगे का, और उसमें उस जर्नी में इंस्टाग्राम कैसे फिट आएगा? प्लान तो एक्टिंग का ही है और एक्टिंग करनी है, तो उसमें इंस्टाग्राम ऐसे बेनिफिट कर सकता है कि लाइक मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं कि अब मैं ये कर रहा हूँ. लाइक जैसे मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 करी, तो मैंने लगभग 1 साल पूरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस को हाइप में बना के रखा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ. क्योंकि उस टाइम पे मुझे खुद नहीं पता था मेरी बीएड आती नहीं आती, तो मैंने ट्राई भी किया उस टाइम, क्योंकि मैं सरदार प्ले किया था मैंने उसमें कैरेक्टर, तो मैंने बीएड ग्रो करी. तो लोगों को ये हो रहा था कि हाँ कि ये बीएड ग्रो करा किस लिए कर रहा है. मैंने वेट पुट ऑन किया, तो 1 साल मैंने पूरा हाइप बनाया. फिर मैंने एकदम से ब्रेक थ्रू किया इंस्टाग्राम पे कि मैं मूवी कर रहा हूँ. तो उस चीज़ में जो मुझे हाइप मिली, और उस चीज़ में मूवी के लिए मेरे को मतलब एकदम से लोगों ने बहुत एकदम से रिस्पॉन्स, जो अमेजिंग रिस्पॉन्स आया, चाहे यूट्यूब पे किसी पे भी हो, तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू आया और एकदम से आया. तो वो चीज़ में बहुत हेल्प करता है कि आप अपनी ऑडियंस के बीच में हाइप बना सकते हो अपनी चीज़ों को लेके. और लाइक मेरी अब कोई वीडियो भी आती है, पहले मैंने मूवी के लिए तो किया, मैं वीडियो के लिए भी हाइप बनाना क्रिएट कर देता हूँ कि हाँ मेरी मूवी वीडियो आ रही है, मैं उसका पोस्टर लॉन्च करता हूँ. पहले हम ये सब नहीं करते थे यूट्यूब पे, वो सब लाइक गाने में करते थे, बना दिए गानों में या मूवीज़ में होता था. अब हम यूट्यूब पे भी वो चीज़ कर रहे हैं, और वो इंस्टाग्राम बहुत फ़ायदा देता है इस चीज़ के लिए. Thank you so much. Thank you. Karan, you Yeah. are open for questions. Yeah. Thank you so much. I think Jassi and Harsh, मतलब आप लोगों ने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, एंड क्या अमेजिंग बातें बताई, जो कि मेरे को नहीं पता कितने लोगों को पता थी, मेरे को तो नहीं पता थी, तो मेरे को बहुत मज़ा आया. I'll request, I know आपका आगे भी schedule है, so if you want to, if you want to carry on with your schedule, and for the media, Manish is going to be here for all the questions. If you can have a round of applause for Jassi and Harsh, please. Thank you so much. Thank you जी. Thank you मिलते हैं जी फिर अपन. थैंक यू. Thank you. Thank you again, Jassi and Harsh. हमारे साथ मनीष हैं जो 5 मिनट बताएंगे. अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछेगा, एंड we'll be very happy to respond to them. Manish, how many total followers Instagram has in India? In India, how many total? मेरी वॉइस वैसी है. टेंटेटिव कुछ है, कुछ ऐसा डेटा? हेलो. Here we don't share in India numbers for each of the apps and each of the platforms as such. Global number तो मैंने आपको दिखा दिया था. अच्छा, एक एरर है जो कि ऑफिशियल अकाउंट्स पे सडनली आ जाता है, लिंक नॉट अलाउड व्हेन यू लाइक समबडीज पिक्चर. कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट टेक्निकली? I'll have to get back to you, but अभी कर देते हैं. Sir, apparently Instagram is removing likes. That's right. Yeah. So which a lot of influencers are not liking, because Instagram is removing likes, which is affecting their business. And you're talking about creators, and they are criticizing this because obviously they cannot know how many people they are engaging. So do you think this will affect your influencers, that community? And how do you expect to manage this thing, because that is their business and that is how they know how many people they are engaging? Sure. I want to answer this question in 2 parts. The first part is why we are removing likes. The second part is how does it impact the business of the influencers, or the impact of the influencers. Regarding the first part, Instagram is a home for safe expression, for a place where you are able to express yourself without any pressure. For a lot of users globally, right, the
pressure, that the peer pressure, right, that is created by how much their post is being liked or interacted with, is something that we believe is not good as such for the well-being of those users. That is the fundamental reason why we are removing those likes. Influencers, as we were talking about in the insights, they will get the information as to how each of their posts or each of their interactions has performed. उनके पास वो information है, मगर वो information is not on the publicly available on the post. So to continue growing their business, they have that information. That information will continue to be there as they go and work with brands, they go and work with promoting themselves and their products. Okay, so just one more question. That is that Instagram has an issue. That is an issue of paid followers, issue of paid likes. That is there, and obviously then you cannot know which account is actually that big and which is the account with paid likes, paid followers. So how is Instagram tackling this situation? Because this is there. There are numerous Instagram pages that claims to sell followers, that claims to sell n number of followers for n amount of money, which is obviously something of a negative impact. So how is Instagram tackling this issue? I think fundamentally, as you've realized, right, reducing the focus on the number of people who are liking, right, and not making that as the center of the platform is one of the critical ways that we are making the platform safer, safe for expression, safe for people, and fundamentally the right place where people are coming in and growing their audience, right, growing their true authentic audience with true authentic posts. We do a lot of work on the background to try and figure out and try and take away any of these kind of factors that are there, right, that are artificial factors. Okay, Thank you. सर जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं अभी और इंस्टाग्राम सो जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं अभी तक उनको फेसबुक ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ज़्यादा इंस्टाग्राम में. जैसे आपके लिए पोस्टिंग है 10 फोटो से ज़्यादा पोस्ट नहीं हो सकती है, तो देयर आर मैनी फीचर्स जिसकी वजह से इंस्टाग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, ज़्यादा फेसबुक ज़्यादा ईजी लगती है. और उसमें जो बूस्टिंग का रहता है, जो एड्स है, अगर लाइक वाइज मैंने कोई इजीली लिया और मैं उसको बूस्ट कर दूँ, सो मैनी पीपल कैन सी द सेम बूस्ट, राइट. तो ऐसा कुछ है हमारे इंस्टाग्राम में भी. दो कंप्लीटली अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग मतलब से अलग, मोटिवेशन से अलग, एक्सप्रेशंस के लिए. दोनों में दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों बहुत अच्छे. I honestly believe, right, that very different needs are met by both the platform. They have very, very independent, unique ways that they perform. And we'd love for you to be on both the platforms. आप Facebook पे जो कर रहे हैं beautifully वो कीजिए. आप Instagram के benefits के लिए, उस passion के लिए use कीजिए. Thank you. Very diplomatic. Any other questions? Can we do one more?